Hello, students. Today we will start our next unit, adverb. In our previous video, in our previous class, we discussed about adverbs. What are adverbs? Add verbs. Adverb. What is the meaning of this? Adjective of verb. What is an adjective? Adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. But adverb qualifies a verb, means how an action takes place, where an action takes place, when an action takes place. मीन्स कि जो हमारी वर्ब है, यानी कि जो हमारा एक्शन वर्ड है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, वो सब एडवर्ब्स होती हैं. जो वर्ड हमारी वर्ब के बारे में बताता है, पर्सन के बारे में नहीं बताता. जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन इनके बारे में बताता है. जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है. लेकिन अगर मैं कहूँ शी राइट्स ब्यूटीफुली, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन these sentences? She is beautiful. She writes beautifully. She is beautiful. Okay? And she writes beautifully. तो इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ हुआ है, दैट क्वालिफाइज शी इज़ अ प्रोनाउन. ठीक है, मतलब कि शी इज़ ब्यूटीफुल मीन्स हेयर इज़ अ गर्ल हु इज़ ब्यूटीफुल. तो ये शी के बारे में बता रहा है. लेकिन शी राइट्स, अब उसका लिखना सुंदर है, वो लिखती सुंदर है नीटली, तो वो लिखती सुंदर है. तो यहाँ पर शी के बारे में नहीं बल्कि राइट जो कि एक वर्ब है उसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, तो वो एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब वही होती है जो आपकी वर्ब के बारे में बताती है कि वर्ब यानी एक्शन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताती है, उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं. Now let's get started. Raghav has joined a new school. He misses Miss Shireen, his class teacher in old school. The new class teacher wants to know why he likes Miss Shireen so much. She asks him to fill up a form using words given in the aid box below. Okay, here is the aid box. You can see here. Some words are given. Always. Always means हमेशा. Often. अक्सर. Rarely. मतलब जो काम बहुत कम होता हो. Sometimes. Never. Gently. Patiently. Strictly. Clearly. Well. इन सब का मीनिंग आपको पता ही है, नॉर्मल यूज़ होते हैं. अब राघव को ये फॉर्म फिल करना है. Here are some questions given to Raghav and how he answers. Let's see. How many times did she give you homework? And Raghav says always. मतलब वो आपको होमवर्क मतलब कितनी बार देती थी? ऑलवेज, हमेशा देती थी. एक अच्छा टीचर वही होता है जो आपको हमेशा होमवर्क देता है, आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर करता है ना. हाउ डिड शी लिसन टू योर प्रॉब्लम्स? पेशेंटली, कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को बड़े ही मतलब पेशेंटली कि धैर्य के साथ सुनती थी. ओके. हाउ डिड शी स्पीक वाइल टीचिंग? क्लियरली. हाउ डिड शी टीच? वेल. हाउ मेनी टाइम्स डिड शी allow you to play games?
Sometimes. How many times did she point out your faults? Rarely. कि बहुत कम वो हमारे फॉल्ट निकालती थी, हमेशा हमें कहती थी कि गुड गुड, यस यू कैन डू इट. हाउ मेनी टाइम्स डिड शी गेट एंग्री? नेवर. वो कभी गुस्सा नहीं होती थी. हाउ मेनी टाइम्स डिड शी स्माइल? ऑफन. तो ये राघव ने जो आंसर्स दिए हैं वो हैं, ठीक है. कि तो यहाँ पर क्या है, ये जो वर्ड्स हैं हमारे, जो हमने राघव ने आंसर लिखे हैं, ये क्या बता रहे हैं? गिव यू होमवर्क के बारे में, लिसन प्रॉब्लम के बारे में, स्पीक वाइल टीचिंग, कि जब वो बोलती थी तो जब पढ़ा रहे होते थे तो कैसे बोलते थे, कैसे वो टीच करती थी, कब वो आपको गेम खेलने के लिए अलाउ करती थी, ठीक है, कब आपकी गलतियां निकालती थी. ये सारी जो हमारी वर्ब है उसके लिए ये चीज़ें यूज़ हुई हैं. तो दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स. ओके. नाउ वर्कशीट 2. Match column A with column B and write the sentences so formed in the space given below. One has been done as an example. Here we can see the table. It's column A and B. The nurse held the baby. Nurse ने बेबी को कैसे पकड़ा? Tenderly. Tenderly क्या होता है? बड़ा मतलब अच्छे से. बच्चा बहुत, टेंडर का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है. तो जो बच्चे को, छोटे बच्चे को जो नर्स पकड़ेगी टेंडरली, ठीक है. द मैन शाउटेड एंग्रीली. चिल्लाते तो गुस्से से ही है ना. द चाइल्ड वॉच द कार्टून फिल्म excitedly. He was late for school, so he walked hurriedly. अब वो लेट हो रहा था. hurriedly means जल्दी जल्दी चलेगा वो, है ना. The old lady climbed the staircase. Now you can imagine an old lady if he trying to climb the staircase. How does she climb? Slowly. अब जो बुजुर्ग होते हैं वो तो धीरे धीरे ही चलेंगे. Grandmother listened to the children patiently. The boys clapped for their team happily. The mother kissed her child lovingly. So we all have matched this table, and then you will have to write the complete sentence in the space given here. Okay. The nurse held the baby tenderly. The man shouted angrily. The child watched the cartoon film excitedly. And he was late for school, so he walked hurriedly. And you have to encircle the verb also after writing these sentences. Okay. Here is the instruction. Now circle the action word in each sentence. So you have to encircle the verb. The words in column B help us to know more about the meaning of action words. यानी action word कैसे हुआ तो उसके बारे में बता रही है जो कॉलम बी में वर्ड्स दिए हुए हैं. तो जो कॉलम बी में वर्ड्स हैं वो हमारी एडवर्ब्स हैं. ओके. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द matchbox. How did the nurse hold the baby? Tenderly. How did the man shout? Angrily. How did the child watch the cartoon film? Excitedly. How did the boy walk to school? Hurriedly. How did the old lady climb the stairs? Slowly. How did the grandmother listen to the children? Patiently. How did the boy clap? Happily.
The words that describe the action words are called adverbs. जो वर्ड हमारी जो एक्शन वर्ड्स होती हैं, जो हमारी वर्ब होती हैं, उनको डिस्क्राइब करती हैं, क्वालिफाई करती हैं, मॉडिफाई करती हैं, वो हो गई एडवर्ब. Now here is a conversation between Rohini and a school principal. Rohini, principal says, Rohini, I am very angry with you. Sir, I am sometimes late. Then principal says, no, you are always late. And then Rohini says, I live quite far from school, so I frequently get late. Then principal says, you are so careless. I will have to punish you today. And she says, I'm sorry, sir. This is the conversation. You can see here, sometimes late. Late कितनी बार होती है? कभी कभी. तो वो अपने लेट होने के बारे में बता रही है कि कभी कभी लेट होती है. और वो कह रहे हैं, नो, यू आर ऑलवेज लेट. ऑलवेज. I live quite far from school, so I frequently quite far, दोनों ही adverbs हैं. You are so careless. I will have to punish you today. जो punish के बारे में बता रहा है कि punish कब होंगे? Today. I'm sorry, sir. On the basis of the conversation you have just read, and answer the questions given below. According to the principal, how often is Rohini late? Always. वो तो कहती है कि मैं कभी कभी लेट होती हूँ, लेकिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो कितनी बार लेट होती है? ऑलवेज, हमेशा. Why does the principal plan to punish Rohini? क्यों रोहिणी को पनिश करने का प्लान बनाया प्रिंसिपल ने? बिकॉज शी इज केयरलेस. वो कहते हैं कि यू आर केयरलेस. अकॉर्डिंग टू रोहिणी, हाउ ऑफन इज शी लेट? समटाइम्स. हाउ फार डज रोहिणी लिव फ्रॉम स्कूल? क्वाइट फार. Raghav teacher told him that he has stood first in all India general knowledge examination. He is very happy and writes a diary entry. Read it carefully. We have to write date at first when we start diary entry and then time. शाम को ही लिखते हैं हम डायरी. Today. ये जो बोल्ड वर्ड्स दिए हैं आपको इसमें, इन्हें आपने केयरफुली देखना है. Today is the happiest day of my life. I have stood first in all India general knowledge examination. I telephoned my parents in the evening, but they had already received the news in the morning. They are coming to see me in the hostel tomorrow. They will stay in town till next Monday. Tomorrow I will get the award from the governor. Raghav. अब यहाँ पर देखिए, happiest day of my life. Which is the happiest day of my life? Today. Today. And when his parents telephoned him in the evening. And when they received the news in the morning. And when are they coming to see him in the hostel? Tomorrow. Okay? And they will stay in town till next Monday. And when will he get the award? Tomorrow. So ये जो words हैं, ये आपको ये बता रहे हैं कि काम कब हुआ या कब होगा. Means when. अभी तक हमने जो पेजेस किए हैं उनके अंदर हमारी जो वर्ब आई वो हाउ, यानी कि काम हमारा कैसे हो रहा था. ठीक है, वो भी एडवर्ब है. और काम हमारा कब हुआ वो भी एडवर्ब है.
All the words written in bold letters tell us when the action take place. They are also adverbs. वो भी सभी adverbs हैं. On the day of the award giving ceremony, Raghav was interviewed by a press reporter. Read his interview carefully. Underline all the words in Raghav answers that tell us when and how often the action takes place. Here is the interview we can see. Okay. Press reporter asks, who gave you the good news? Who gave you the good news? Raghav, principal sir gave me the good news yesterday. उन्होंने न्यूज़ कब दी? When? Yesterday. Then press reporter asks, how do you feel? I am very happy today. I am very happy today. Press reporter, was this first time you took the test? Raghav, yes, I have never taken the test before. Press reporter, what are your future plans? Raghav, there are more examinations. Next year I will take them also. What is the key to your success? Raghav, I read the newspaper daily. Press reporter, thank you, Raghav, best of luck. So, here are some words given that you can say when the action takes place, okay? And the action took place yesterday, today, first time, never, before, in future, next year, daily. Okay, so these are the words, and these qualifies that when the action take place. So we can call it adverbs. These are adverbs. Okay, look at the picture carefully. This picture, every person is doing something. So now describes the scene by filling in the blanks with words that and phrases that tell us where the action take place. Take help from the aid books. And the words written in aid books are everywhere, in front of, in the shops, back to their parents, out of the Vimal showroom. Okay. The market is very crowded today. There are people everywhere. हर जगह लोग हैं. There are many customers in the shops. In the shops. Many children are standing in front of means सामने ice cream parlor. Some children have bought ice cream and are running back to their parents. We can see here this is ice cream parlor and some kids are standing there and some children are running after their parents. A man is climbing a ladder and a crowd has gathered near the electric shop. A lady coming out of the Vimal showroom. Out of the Vimal showroom. A lady coming out of the Vimal showroom is carrying many packets. The words that you have filled, we have filled everywhere, in the shops, in front of, back to their parents, out of the Vimal showroom. These words tell us where the action took place. They also are adverbs. हमने किया how के बारे में, when के बारे में, यानी जो words हमें बताते हैं when कि काम कब हुआ, काम कैसे हुआ, वो adverb होती हैं. अब हमें पता चला
कि वेयर, अगर हमारा एक्शन जो वर्ड है वो कहाँ हुआ, वेयर द एक्शन टेक प्लेस, टू प्लेस, तो वो भी क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ, यानी हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये चीज़ें हमें माइंड में रखनी है, तो वो सभी एडवर्ब्स होंगे। Now compare the following sentences by using words from the aid given below. Here is the aid box. This is the aid box. Everybody, every day, loudly, sweetly, neatly, slowly, proudly, lovingly, nervously, quietly. These are adverbs, and we have to fill it according to the sentence. The thief entered the house quietly, chup chap. She made the bed neatly. She watches television every day. The beautiful girl walked proudly. Just because she is beautiful, that is why she walked proudly. Means I am beautiful. Yes. The old man walked slowly. My brother shouted loudly. The dog licked his master lovingly. She bit her nails nervously. When we are nervous, we start biting our nails, है ना? जब हम थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं तो हम हमारे नाखून चबाने शुरू कर देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की आदत हो. But she bits her nails nervously. The girl sang sweetly. So these are the adverbs according to the sentences that are given here, and read the questions given below. Write one word answer. How often do you read the newspaper? Always. अगर आप कभी नहीं पढ़ते तो you will write here never. How many times do you go to school without doing your homework? कभी मतलब अपना होमवर्क किए बिना आप स्कूल कभी जाते हैं? नेवर. बट अगर आप जाते हैं कभी कभी तो यू कैन राइट हियर समटाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स यू गॉट एन excellent grade from your teacher? Here is written always, but you can write here often. मतलब अक्सर कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी नहीं मिलता, लेकिन ऑफन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं. ऑलवेज मिले कोई ज़रूरी नहीं है. हाउ ऑफन डू यू गेट पनिशमेंट फ्रॉम योर टीचर? समटाइम्स. और अगर आपको कभी नहीं मिलती तो आप नेवर लिख सकते हैं यहाँ पर. हाउ मेनी टाइम्स डू यू डिसओबे योर पेरेंट्स? नेवर. हाउ ऑफन डू यू क्वारल विद योर सिस्टर और ब्रदर? समटाइम्स. Read the paragraph given below. It is incomplete. Fill in each blank with one suitable word. Here is no aid box given, so we have to write of our own. Okay? Ria is dash good girl. Ria is a very good girl. Very भी एक adverb है. Good adjective है. जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वो भी एडवर्ब ही होता है. वेरी एडवर्ब है. शी ऑलवेज हेल्प्स हर फ्रेंड्स. रिया इज अ वेरी गुड गर्ल. शी ऑलवेज हेल्प्स हर फ्रेंड्स एंड स्पीक्स स्वीटली with everyone. She never disobeys her elders. ठीक है, वो अपने बड़ों का कहना मानती है, वो उनको कभी डिसऑबे नहीं करती. शी एक्सप्लेन्स थिंग्स वेरी क्लियरली. एक्सप्लेन तो हम क्लियरली वर्ड यूज करते हैं. शी डज हर होमवर्क डेली. शी ऑल्सो प्लेज बास्केटबॉल वेरी वेल. अगर आपको अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं. Read the following conversation that took place between Rohit and Mayank, who had quietly entered a mango grove. Underline the words that tell us where the action take place. Come here, Mayank. Look at these mangoes. Let
us climb up this tree and pluck some. You may climb up and throw them down. I will catch them. What if the gardener sees us? He lives in the garden. Don't worry, we will run away. We will jump over the wall. But the gate is far from here. We'll get caught. So, this is a conversation between Rohit and Mayank. एंड आपको अंडरलाइन करने हैं जहाँ जहाँ वेयर द एक्शन टेक प्लेस, हाउ नहीं, सिर्फ वेयर कि एक्शन कहाँ हुआ, जो वो वर्ड बता रहे हैं वो आपको यहाँ पर अंडरलाइन करने हैं. सो योर चैप्टर इज हैज़ completed and you have to write these words in the book and complete this chapter. Till then, bye bye.